दर्ज होगी अनडाउटफुली। और जहां तक सवाल है, हमें भी इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया, इसलिए हम संगठकों का अभिवादन यहां पर करते हैं। Absolutely, could be the start of the over number first and straight away Sajid get that one between the two fielders down to deep cow point region. Before the fielder from the deep extra region to run across to field the ball, ample time for Sajid to complete the couple of runs. This is one team, I think, Gopi, five-star ADOOR. They really deserve the place in the big final. The way they really played a game of cricket in the last 2 days, and definitely they deserve the place in this big final of this prestigious cricket tournament, YUVARATNA trophy. This time lofted. That was a glorious shot. He's just knowing for that. He's such a danger batsman. Look at the way he picked that one right from the middle of the bat. Across the line of the delivery, swinging his bat, got that one right from the middle of the bat, and he got the distance as well. So score jumped into 8 on the board without loss of any wicket. Eight without loss of any wicket. Outstanding struck there from Sajid. Absolutely fantastic struck. And from the far end, Ansar, right arm over the wicket. Bowls this time. Oh, other end. This time no need to run for that. Ball is just like a Gopi. It was a stroke from the cannon. What a great stroke that one. Absolutely is on fire in the final. He's been unstoppable. And already I mentioned, Gopi, if you remember me or not, I told that if any team from the Group A ranking teams qualify to the final, I think it's not an easy final for them, because they're playing against one of the best team which is qualified for the final. It's none other than five-star ADOOR. And look at a lot of noises coming here. Such a fantastic to watch festival atmosphere out in UCG. The supporters of five-star ADOOR really enjoying the stroke play, and he's gone. So Sajid is gone. Little bit excitement, little bit aggressive frame of mind. He definitely got a 1-6 and bound. He immediately wanted one more big shot, but this time Ansar just got a revenge. Absolutely got a revenge here after a punishment which came from the bat of Sajid. 1 towards a deep backward square leg for a maximum, 1 towards a deep third man boundary for a 4, and altogether he got 10 valuable runs from 12 valuable runs from his bat. He's back into pavilion. But I think Gopi, he did the damage what he wanted to do in the first over of the power play. बिल्कुल अपना किरदार पहले ओवर में वो अदा कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। एक छक्का एक चौका लगाने के बाद 12 रन यहाँ पर उनका कुल रन संख्या है। और साजिद लगभग कितने गेंद उन्होंने सामना किया? साजिद ने 4 गेंद उन्होंने सामना किए, 10 रन उन्होंने बनाए 250 स्ट्राइक रेट की मदद से। 12 रन उन्होंने बनाया 300 स्ट्राइक रेट की मदद से। तो बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं साजिद। सतीश, absolutely, it was a wonderful strike rate here. Oh, drags the ball into the stamp. Asif ADOOR, the captain, departs. Ansar back into this game very strongly. This is a kind of the bounce back is required, Gopi, for each and every bowler, isn't it? Absolutely perfect one. But this time is maybe the lucky breakthrough, because Asif is looking for expansive extra cover drive. He got inside edge of the bat, drags the ball into the stumps, and wicket number 2 of five-star ADOOR is back into pavilion. And Gopi, the more than the wicket of Sajid, I think this wicket is definitely going to be very costly for ADOOR, because he is the one, Asif, who really played a magnificent innings in the semi-final when his team is struggling to get runs on the board. When the wickets are tumbling in front of him, he single-handedly played a captain's knock for his team. He scored almost, I think, 28 to 27 runs he got in the semi-final, and his wicket definitely going to be a very, very big breakthrough for GORI Young boys. बिल्कुल सतीश, आसिफ का विकेट का गिरना इस वक्त निस्संदेह बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि आसिफ एक ऐसे बल्लेबाज है जो करारे स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है। और यहाँ पर कुछ गलत लाइन की गेंद नहीं थी, कुछ अच्छी लाइन की गेंद नहीं थी कहना पड़ेगा। गेंद को अंदर खींच लिया था, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और अपनी स्वयं गलती की वजह से विकेट वो दे चुके हैं। और इस बार and he's got the hat-trick. He's got the hat-trick. और सतीश 2, 4, 6, 4 and 3 wickets. 1 over, low maiden, 12 runs, 3 wicket. और यहाँ पर
सतीश, इसे क्या कहेंगे? अच्छी गेंदबाजी या बुरी गेंदबाजी? Buri batting, Gopi. And 12 for the loss of 3 wicket. What to say, Gopi? The wicket is wicket. It is counted. Whether it's a bad ball or whether it's a bad stroke. The wicket is in the accounts of Ansar only. And two excellent, the deliveries, of course, the two strokes, there is no ball is called as a bad delivery, Gopi, in this particular over because the batsmen did a fantastic job to hit the ball. And after that, he picked the wicket of Sajid. His level of confidence is definitely going to really increase. And because of he got a wicket of Sajid, immediately picked up two valuable wickets. That's the level of confidence. That's the kind of bounce back required. And Ansar once again outstanding. Third hat-trick of this cricket tournament, and he's just registering his name in this fantastic YUVARATNA Champions Trophy. He is one more bowler who got a hat-trick in this tournament. Of course, it's not that much of help for the bowlers in the particular cricket tournament, but some of the bowlers proved that they can be effective if they bowl very well. And Ansari got a hat-trick in this big final, mega final. Now Afridi. So far he's got outstanding tournament from his bowling for GORI Young boys. Bowling right arm over the wicket. This time Altaf drives that one, not quite getting hold of the net properly. And already mentioned that against his bowling, driving the ball, hitting the ball, not so easy. Only one batsman, that is a Mansoor of NM Cricketers Bangalore, able to clear the ground with his absolutely magnificent footwork and the timing in behind the stroke. Otherwise, so far he's been some unplayable quicker delivery from this end. Afridi bowling with a short arm with the jersey number 100. Right arm over the wicket. Balls to Nainar. Nainar this time turns that one down. The short one leg division for 4 runs. That ball is really running down to deep fine leg boundary for 4 runs. There is no protection has been given for Nainar in the fine leg. And once he got a little bit bat onto that, the square leg fielder a little bit square and very difficult for him to chase that one. And again, lot of noises, support coming here for 5-star ADOOR. I think they got some supporters came here in UCG cricket ground to come and watch the performance of their favorite players. Just 17 for the loss of 3 wicket. Very good score on the board for 5-star ADOOR. Again, the line is not good. Down the leg stump going to be wide. Frustration and pressure straight away there for Afridi. Each and every ball, enjoyment, joy coming from the supporters. 18 for the loss of 3 wickets. A big final. GORI Young boys, they came into this tournament as underdogs, especially in the ranking teams. What they got, they're not a very good ranking in this particular cricket tournament, but they bounced back very strongly. They came into the finals of this cricket tournament. Again, one more wide. He's struggling, absolutely struggling. Looks like he got a little bit pain in his right leg, and maybe because of that he couldn't manage to get the line and land proper. But I think Gopi, it's not a good news here for GORI Young boys because so far he's done a wonderful job in his bowling, because bowling power play over is not any easy, and throughout the tournament he's done a great job for GORI Young boys, but this time he's a little bit struggling. Maybe looks like Gopi the hamstring injury, and the hamstring injury is happening only when you are playing continuous matches. Maybe it's definitely going to be the result of that is feeling a lot of pains. बिल्कुल, हैमस्ट्रिंग इंजरी आप हैवी क्रिकेट खेलने की वजह से होती है, मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर गेंद फेंकते ही शायद कोई नस खींचकर इस वक्त पकड़ लिया था, तो इस वजह से वो इस वक्त पैरों में दर्द महसूस करते हुए, लेकिन वो इस वक्त सक्षम है गेंदबाजी करने के लिए, तैयार हैं, और देखते हैं अगली गेंद पर वो क्या करते हैं. Absolutely, Gopi, and Afridi once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, balls to Nainar, technically very on player. He is struggling, absolutely struggling now. Now he's with the arm. He's putting his right hand, it's left arm, bowling arm. That means he's feeling a lot of pain here. One more addition to two more addition to total scoreboard was on 21 for the loss of 3 wicket. And Gopi, you are talking about that heavy cricket. We are thinking that the players are playing only here, but they are playing other part of the Mangalore as well, where there is a tournament. So many tournament is going on. The players having a very busy schedules, and because of that, I think they couldn't manage to keep maintain their fitness level, and certainly they are a little bit struggling here. 21 for the loss of 3 wicket, and Afridi once again back to his bowling mark, bowling with a short run of
Right arm over the wicket, balls to Altaf. Altaf tries that one, but Mr. Got appeal for caught behind. Excitement from Arshad behind the stump, and with that appeal, Gopi, I want to see, nice to see that he's got a big smile in his face, and he is a very friendly nature, the very good cricketer Arshad, no doubt at all, and 21 for the loss of 3 wicket in the over number second in progress. Big over here for ADOOR. Again, the one more wide, prolong over, not really going here for GORI Young boys. The big final, they started to feel the pressure, especially the bowler here, not really getting his line and line. 22 for the loss of 3 wicket in the over number second in progress. Already they got a very, very big over here for 5-star ADOOR. Altaf is on strike now, facing Afrida. Balls this time, good one, absolutely good one in the relegation, right on the line in the distance, a little bit outside the line of off time, but it's a quicker delivery in there from Afrida, and scoreboard now remains at 22 for the loss of 3 wicket. Slowly, Sun started to moving towards the sea here. Looks like they will go into the Sun will go into complete his duty for the day, and it is a Sunday and day belongs to Sun. But wait and see. In this particular match, day belongs to which team? Whether it's going to be a GORI Young boys, will it going to be a 5-star ADOOR? But 5-star ADOOR, definitely they're going to enjoy each and every wide deliveries, extra deliveries. 24 for the loss of 3 wicket. Warning, two deliveries remaining. Yes, 2 balls remaining of this over of Afridi. Prolonged over, it's a big over. Right above the kitty balls. Again, that's down the next time. Again, it's going to be a same result. How many balls he bowled? Already bowled 10 deliveries, Gopi, and it's definitely going to be a disaster for GORI Young boys. Not only they get extra deliveries, but extra runs here. 25 already on the board for a 5-star ADOOR. They got all the chances here to become the champions. A lovely shot, but not quite able. Oh, misfield by the fielder. Shivaraj not really up to the mark at backward point region. Again, he made a misfield. Again, the Niner got a couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 27 for the loss of 3 wicket. It's just a second over in progress. 5-star ADOOR. They are cruising towards some big score here in the big final, the mega final of this cricket tournament. From the commentary box end, right arm over the wicket, delivers. Again, that ball hitting his leg down the leg stump. No question of leg before, but that's question of leg by as well. One more addition to total. 2 overs completed after completion of over number 2. 5-star ADOOR are 28 for the loss of 3 wicket. And Gopi, 28 for the loss of 3 wicket. Now 3 overs remaining, and the kind of the bowling which is required in the big final, mega final, a little bit disappointment for GORI Young boys. Very interesting to see that the organizer decided to reduce the number of over because we have a shortage of time, but number of over remains the same. 6 over. He bowled 2 overs and 28 for the loss of 3 wicket, Gopi, and now 3 overs remaining. I think if GORI Young boys want to put some break in the run rate, they have to bowl very well remaining 3 overs. Otherwise, 5-star ADOOR are looking towards some big total in the big final. एग्जैक्टली सतीश, और पिछले ओवर में 12 गेंद जो अफरीदी ने फेंके उसकी बदौलत यहाँ पर एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है 5-स्टार ADOOR। और कुल मिलाकर पिछले ओवर में रन से बने कुल मिलाकर 16 रन पिछले ओवर में बने, और उस ओवर की बदौलत 5-स्टार ADOOR एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुका है। अब 3 ओवर में बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर करनी है गेंदबाजों को GORI Young बॉयज के। और अरशद इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त नैनार इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और ओवर की
पहली गेंद लेकर इस वक्त अर्शद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर, इन फैक्ट 29 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जिस तरीके से यहां पर 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, ये गेंद इस बार ह्यूज वन, इट्स अ बिग वन, मैक्सिमम ओवर डिफेंस एंड ऑन द रोड 35, so fantastic struck this time came from the bat of अल्ताफ, और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। What outstanding batting performance continuing here from the batsmen of 5-star ADOOR। और यहां पर गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज सही राह को इस वक्त तलाशते हुए, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए और रन्स आसानी के साथ बनते हुए, और 5-स्टार ADOOR इस वक्त एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। तो अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, गेंद निकल चुकी है, फाइन डीप थर्ड पर सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए बाई के रूप में, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, और शॉर्ट थर्ड मैन फीडर भी गेंद तक पहुंच नहीं पाए, गेंद निकली फाइन, और यहां पर बल्लेबाज का बल्ला टूट चुका है, बैट हैज बीन ब्रोकन, उनका हाथ उनके बल्ले से अलग हो चुका है, और हाथ और बल्ला दोनों को लेकर वो इस वक्त पेविलियन की ओर बढ़ते हुए और अपना बल्ला यहां पर बदलने के लिए, बैट बदलने के लिए, तो करारे तरीके से इस वक्त जमीन पर उन्होंने बल्ले को मारा था, और यहां पर 40 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर अपना बैट बल्ला बदलने के बाद इस वक्त क्रीज की ओर लौटते हुए, और 10 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त खेलता हुआ 5-स्टार ADOOR। और जहां तक सवाल है रोशनी का, तो रोशनी इस वक्त मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, अंधेरा सा छा चुका है, और यहां पर 6:20 शाम के बजते हुए, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द यहां पर आगे बढ़ाए। तो इस बीच स्ट्राइक लेते हुए अल्ताफ और अरशद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, विकेट कीपर प्रताप गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और हर रन के साथ बाजों की आवाज, सीटियों की आवाज यहां पर सुनाई देती हुई 5-स्टार ADOOR के समर्थक सपोर्टर्स द्वारा अपने टीम का मनोबल वो बढ़ाते हुए बाजों के साथ, सीटियों के साथ, और कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। So 2 overs left in overall calculation in the innings, और देखना यह कि इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। प्रताप गेंदबाजी पर इस वक्त लगाए गए हैं, और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 42 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स 42, और प्रताप की ओर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, लेग कटर गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 43, 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जस्ट 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से दे, गेंद लेग कटर गेंद थी, गेंद का इंतजार किया अंतिम क्षण में, और गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। बल्लेबाज ने पूर्वानुमान लगाया था कि गेंद तेजी के साथ आएगी, लेकिन गेंद आई इस वक्त धीमी गति से, और गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने के बाद 1 रन बल्लेबाज पूरा यहां पर कर चुके हैं। 44 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रताप बाउल्स एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल इन दिस सिचुएशन। लेग कटर गेंद थी, लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई, फ्लैटेड गेंद थी, और यहां पर चकमा खा गए इस गेंद पर, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। प्रताप ये गेंद ऑन साइड पर उछलना चाहा, मिड विकेट फील्डर के हाथों में गेंद, बल्लेबाज आगे दौड़ा लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। एक बेहतरीन ओवर
साबित होता हुआ यहाँ पर प्रताप का, जिसमें सिर्फ 2 रन वो दे चुके हैं पहले 4 गेंदों में, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद राइट हैंड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज एन ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग। गेंद को इस वक्त टॉस किया था, बल्लेबाज को ललचाया था कि वो आक्रामक स्ट्रोक खेले, और इस लालच में बल्लेबाज आ गए। फ्लाइटेड गेंद, लेग कटर गेंद, और गेंद की फ्लाइट बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे निकली, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर उतरे। अली बैट्समैन दयविಟ್ಟು आदर्श बेग ने क्रीज के परबेकागी विनंती। तो एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट इज गोइंग टू बी 7 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर दौड़कर पहुंचते हुए फयाज, नंबर 6 बल्लेबाज, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार प्रताप, इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक इस गेंद, और फयाज इस बीच 2 कदम आगे निकले थे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में क्रीज पर अपने कदम उन्होंने खींच लिए। तो बेहतर ओवर, पहला बेहतर ओवर सतीश, जस्ट 2 runs कंसीडर्ड बाय प्रताप इन दिस ओवर, और मैं समझता हूं प्रताप का ये ओवर निस्संदेह अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी पर आएंगे उनका मनोबल बढ़ाने में सहकारी होगा। Exactly, Gopi. It's a better over as far as the GORI Young boys is concerned, after conceding lot of runs in the 3 overs, and certainly it's going to be a very good over there from Pratap there, and need to be Gopi because batsmen are in a very good rhythm, and they're picking up the line and length quite easily for the fast bowlers. Whenever the slow bowler is introduced, batsmen started to feel a little bit of confusion, and that's what the result he got in this previous over. बिल्कुल सतीश, पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया, फील्डर काफी पीछे तैनात, डीप कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। It's 46 for the loss of 4 wickets in the over number 5 and the last in progress at the start of the 5th and the last over in fact, और इस बीच नौफल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑफ द टोज, गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद जाते हुए गली की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। प्रताप फील्डर है, गेंद तक पहुंचे, वही विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, थ्रो, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। सब कुछ इस वक्त 5 स्टार अड्डूर के पक्ष में चलता हुआ, और एक लंबे स्कोर की ओर वो इस वक्त बढ़ता हुआ 48 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। It's 48 for the loss of 4 wicket in the over number 5 and the last in progress, और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद नफल की शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन फिर से मिलेगा, नैनार, और ओवर थ्रो 2 रन, और फील्डर्स, गोरी यंग बॉयज के फील्डर्स की देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो काफी हद तक थक चुके हैं यहां पर, और इन 2 रनों के साथ the 50 comes up for 5-star ADOOR in the over number 5th and the last in progress. 3 balls now left in the innings. ये गेंद नौफल की बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, नॉन स्ट्राइक रन पर यहां पर रन आउट हो चुका है, और सिर्फ 2 गेंदें बाकी है सतीश, और मैं यकीन के साथ कहूंगा कि यहां पर एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन 5-star ADOOR के बल्लेबाजों ने दिया है। Exactly, Gopi. It's a fantastic batting performance by 5-star ADOOR. That's one reason because, Gopi, they're playing with a fresh mind, fresh physical fitness, because they already one day before they came into the finals of this cricket tournament. So that they really looks like they're very, very fresh here. So that is they're playing very nicely as per their game plan, and they dominated the bowling of GORI Young boys. Doesn't look like they came from a team which is a local team, but they really looks like they're better to have in the रैंकिंग टीम नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल सतीश, आपने फरमाया, और काफी फ्रेश अप इस वक्त लगते हुए, क्योंकि आज का पहला मैच खेला है, जबकि गोरी यंग बॉयज आज का 3रा मैच यहां पर खेलता हुआ। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड, 51 द स्कोर स्कोर्ड बाय 5-star ADOOR, and now the target for GORI Young boys is 52. They have to score in the stipulated 5 to clinch the prestigious YUVARATNA Trophy 2022, and for the 52 runs they have to score with the required run rate of exactly 10.40 runs per over. और सतीश यहाँ पर under this condition 52 quite difficult है, लेकिन
गोरी यंग बॉयज के पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, उस गहराई के अनुसार अगर वो यहां पर बल्लेबाजी करते हैं तो लक्ष्य मुमकिन है। लेकिन 5 स्टार अड्डूर के पास न सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई है बल्कि गेंदबाजी में भी डेप्थनेस है, और निस्संदेह अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप गोरी यंग बॉयज को इस वक्त बल्लेबाजी करनी है, उनके बल्लेबाजों को। और मैं समझता हूं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें घातक बल्लेबाजी करने की, और अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप अगर उन्हें घातक बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें मैदान पर उतरना होगा। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. But one more interesting thing to see in this big final, Gopi. The Gori Young boys need to face their own bowler, Fayaz. He is representing his team, his home team, so that they need to deal with that 2 overs of Fayaz, who has been outstanding throughout the tournament. Very interesting to see that how Gori Young boys will going to deal with Fayaz over. And of course, Deepak and then Naufal are the 2 opening batsmen. Definitely they will go into open innings, and I want to see that the battle between Fayaz and 2 opening batters of Gori Young boys is going to be very interesting. बिल्कुल अपने टीम के गेंदबाज के खिलाफ उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी है फयाज, और देखते हैं किस तरह की रणनीति वो अपनाते हैं। हालांकि फयाज के गेंदबाजों से वो काफी परिचित है, और यहां पर देखना यह है कि उनके बल्लेबाजी के खिलाफ कौन सा अस्त्र वो यहां पर इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी में। फिलहाल 52 रनों का लक्ष्य, उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉर द सेकंड लास्ट टाइम हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब गोरी यंग बॉयज की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome back. Again, the big final, mega final. 52 is the target for Gori Young boys to win the big title of this most prestigious YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Bangalore in the memory of late Puneet Rajkumar, and all set now for the chasing. Some destructive batting performance required here from the Gori Young boys opening batters, and wait and see how well they will go into disturb this man. And Fayaz will go into start the proceedings from the community box, and right arm over the wicket, bounce to Deepak going for the big shot, not quite getting a placement right, straight to the hands of Midan. No question of any run. Each and every ball you can see, Gopi, it's very nice to watch, nice to hear some sounds, just like we are in Sri Lanka, especially, and that kind of noises we can hear in Sri Lanka and West Indies as well. The festival atmosphere, and similarly in UCG cricket ground as well. Maybe the supporters of 5-star ADOOR, they came into the large number, because this is a proud moment for the cricket lovers of ADOOR, because coming into the finals of this most prestigious cricket tournament, definitely it's going to be a privilege, and it's going to be a proud moment for the cricket players, cricket followers of ADOOR. That's when they came into large number to support their team, and because of that support, they're getting that much of support. Their performances looks to be fantastic against the Gori Young boys, and looks like it's a very beautiful cricket ground here in commentary box, looking at the spectators out here in the UCG cricket ground, enjoying this big final, and wait and see who will going to become the champion here. The right arm over the wicket, Fayaz bowls, just like I mentioned about Gopi, they need to deal with this man, the young man, Fayaz. Is outstanding throughout the tournament in his bowling, and now he's bowling against his team, and is bowled beautifully. Lot of followers, lot of support here for Fayaz for each and every dotted deliveries. Lot of noises coming here from right of our commentary box, right arm over the wicket. Now fall this time again the beautiful delivery, one more dotted delivery. Is really testing the temperament and the technique of Naufal in this particular over with this line and length. Outstanding.
one without loss of any wicket. Needed some big shot. Gori Young boys. He cannot deal with the dotted deliveries. Each and every dot ball taking you away from the. This time he lofted, high up in there. Long off fielder underneath it. He takes the catch, and now fall is back into pavilion, and Fayaz strikes. And Gopi, well deserved, isn't it? It's just really something is going in the mind of Naufal, because he played a 2-3 dotted delivers that they wanted to break the shackle, and he just got that one over the deep long. They wanted to break the shackle. By doing that, he's got the fielder in the deep long, couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. बिल्कुल सतीश, और 2-3 डॉट गेंदे खेलने के बाद सहज रूप से दबाव उनके ऊपर पड़ गया था, और उस दबाव को उन्होंने हटाना चाहा एक छक्के के जरिए, लेकिन नॉट क्वाइट मिड लगी, टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपका। और इस वक्त यही करना है सतीश, ब्लाइंड स्ट्रोक्स आपको खेलने होंगे, जब रिकॉर्ड रन रेट 10 से ऊपर हो तो आपको खुलकर बल्लेबाजी यहां पर करनी होती है, करारे स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, और वही करना चाहता नौफल, लेकिन दुर्भाग्यवशात उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। Exactly. Now new batsman, one more danger batsman. Arshad came into middle, little bit mix up, misunderstanding between the wicket for that run, but at least they managed to complete the single. But a fantastic start here from Fayaz. Absolutely good start. He just conceded 2 runs and picked up 1 wicket. Now I think the cameraman will go into cover that the supporters of 5-star ADOOR Gopi, they needed to be, because the crowds, the spectators, they're the responsible for the success of any cricket tournament, and especially Gopi, look at the crowd here, jam-packed stadium, and after a long time I think that kind of atmosphere, the lot of noises, lot of sounds, loud oohs and ahs goes around the field, absolutely like just like in international cricket. निस्संदेह सतीश, ऐसा लग रहा है कि मानो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला यहाँ पर चल रही है, और उर्वा क्रिकेट मैदान पर जो भी श्रृंखला होती है सारे जगह उसकी चर्चा होती है, देश विदेशों में उसकी चर्चा होती है, और यहाँ पर ये श्रृंखला जो कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला युवरत्न ट्रॉफी 2022 है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्चून ने, और इस श्रृंखला का मेगा फाइनल यहाँ पर खेला जा रहा है। और निस्संदेह रविवार की शाम को यहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक जो कि दर्शक भर चुके हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर रच चल रही हो। Absolutely. I request fielding team please make it fast. Still they have to bowl another 3 overs and 2 for the loss of 1 wicket. From the far end, the new bowler is introduced from the far end. First ball down the leg stump, and it defeats everyone. Ball running down to deep fine leg boundary, and meanwhile white signal umpire, 2 more to the total. With that a couple of runs, scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Now all up to this batsman Gopi. Nothing is impossible, Gori Young boys. If Deepak and Arshad, as their potential, if they able to bat, they can win the match. This time went for the big shot, missed it completely. Deepak not happy with himself. He wanted to hit that one down to mid-wicket division. Again, he missed it completely. So far, I think 5-star ADOOR, they came into the big final because they got some very good bowling department. They got very good batting department, and they got even better fielding department as well. That's why I already mentioned that any team which is coming to the final, they will definitely going to get some fight from this opposition. That is ADOOR outside the line of leg stump and going to be a wide chance of run out. Direct it might be the curtain of the innings of Arshad there. Ball missed the stump, and Saji is the fieldsman there in the short fine leg region. Tried to hit the stump, missed the stump completely, and 1 more addition to total 6 for the loss of 1 wicket. And Captain Asif ADOOR will not going to bother about that single. He know exactly need to restrict the big shots. He need to restrict the boundaries and sixes, and so far these opening bowlers are succeeded to stop the boundaries and sixes. This is again down the leg stump, but here the bowler maybe looks like he started to feel the pressure, and 1 more wide delivery. Altogether I think he bowled 3 wides in this over, and definitely this wide delivery is going to be a bonus here for Gori Young boys. Now Gopi, more than we are anything else in this particular cricket tournament, one of the most important part of this cricket tournament is Gopi, it's a live
telecast, live coverage. And King Sports in the last 3 days they done a great job, absolutely great job as far as the quality of this coverage is concerned, and they've got a fantastic coverage of this cricket tournament. Again they're going for the single, chance of run out, direct it, ball just missed the stumps here, and one more single is taken in the form of leg by, and with that leg by scoreboard was on 8 on the board for the loss of 1 wicket. And I would like to give special thanks to the owner of King Sports, Badruddin and Naufal, the owner of this cricket tournament, and they did a great job for the success of this cricket tournament as well. From the far end again, now looking for the blind shot, missed it completely. Good piece of early bowling there by the bowler. One more dotted delivery, each and every dot ball. And the target is looking stiffer and tougher for GORI Young boys. They need to get some big shot if they wanted to back into this game. From the far end, right arm. This time again the dotted delivery. Deepak trying and trying, but not really having a contact with the bat. This is not an easy condition, one must say, because under this condition, sighting the ball is definitely going to be a very difficult one. Deepak trying his level best. It's over number 3 in progress, and this is second over in progress. 8 for the loss of 1 wicket. Again from the far end, right arm over the wicket. Deepak swinging his bat again. He's not really getting that one from middle of the bat. He is very disappointed. This time I think is a table delivery. Ball is came in such a line and such a height where Deepak can enjoy his big shot, but the fact that he is a little bit early into the strokes, and ball came very late to his bat. He mistimed it using his feet again. Lovely, absolutely fantastic there from that bowler. He's handling the pressure very well, keeping this Deepak very quiet in this over. 2 overs is going in favor of again 5-star ADOOR. Now I think the target seems to be very difficult one. 42 to get, 44 to get, and in remaining 3 overs. 18 ball, 44. And what do you think? Will it go into a possibility of GORI Young boys now onwards? बिल्कुल पॉसिबल है सतीश, और यहाँ पर सिर्फ चौके या छक्के ही ऐसा कहना पड़ेगा GORI Young boys का भविष्य यहाँ पर बदल सकते हैं। और अरशद और दीपक इस वक्त मौजूद है, दोनों विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर 3 ओवर में छक्के और चौकों की बारिश हो करते हैं, तो निस्संदेह GORI Young boys अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 ओवर का खेल बाकी है, और 1 ओवर उसमें बाकी है इस वक्त फयाज का। तो फयाज की गेंदों पर किस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। फयाज खुद इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर, और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज फयाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अरशद के लिए उछालना चाहा, गेंद लेग स्टंप से बाहर की और निकलती हुई निशाना यहां पर लग चुका है, और यहां पर डिजास्टर एंड दीपक के लिए आगे निकल आए थे, और इससे पहले कि वो अपना बल्ला क्रीज पर रखे, सीधा निशाना दागा था। गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद पर फील्ड करने के बाद, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो दूसरा विकेट गिर चुका है। दीपक का विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा GORI Young boys की विजय की उम्मीदें, आशाएं काफी हद तक कम हो चुकी है। तो अब नए बल्लेबाज प्रज्वल जो कि इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए, और देखना यह है कि वो इस तरह इस वक्त अरशद का किस तरह साथ निभाते हैं। फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अरशद चौके और छक्कों की तलाश में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फयाज की गेंदों का। फयाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अरशद के लिए, गेंद को इस वक्त हल्के से स्टीयर करना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद की तेजी को पहचानते हुए, लेकिन गेंद पर बल्ला नहीं अड़ा पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फयाज, निस्संदेह यहां पर मुश्किलें पैदा होती हुई बल्लेबाजों के लिए GORI Young boys के। दाहिने हाथ राउंड द विकेट फयाज की गेंद, ये गेंद अरशद के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट चटकाए विकेट कीपर ने, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अरशद अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारा आई, ऑन साइड पर स्विंग करने का प्रयास किया था, चूके पूरी तरह विकेट कीपर आसिफ के हाथों में गेंद जैसे ही पहुंची, उन्होंने विकेट जरूर चटकाए आसिफ ने, लेकिन आखिरकार बल्लेबाजी से पहले अपना बैट बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और यहां पर फयाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, फुल टॉस गेंद थी, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को स्विंग किया है, और 1 रन मिलेगा। दूसरे
रन के लिए दौड़ पड़े, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, जिस तरीके से 5 स्टार अड्डूर के खिलाड़ियों ने तालियां बजाई, उनका अभिवादन किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बेहतरीन फील्डिंग हुआ था। तो 2 रन यहां पर मिलेंगे, 10 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 2 wickets। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, क्लीन कलेक्शन, रन नहीं मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर और स्कोर रुक चुका है इस वक्त। आफ्टर सेकंड बाउंस गेंद को इस वक्त क्लीनली कलेक्ट किया था मिड विकेट के फील्डर ने और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से फयाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अरशद के लिए ऑप्शन से बाहर और इस बीच सही गेंद गोचित, बेहतर ओवर की समाप्ति, एक और बेहतर ओवर फयाज द्वारा, 3 ओवर की समाप्ति, 10 रन, 3 overs to 10 for the loss of 2 wickets। And now the target seems to be a much stiffer now for GORI Young boys, 42 to get from 2 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 21 runs per over। और यहां पर परेशानियों के बादल घने होते हुए गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों के ऊपर। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फिगर्स फ्रॉम फयाज, 2 overs, no maiden, 3 runs he conceded and captured 1 wicket with the economy rate of exactly 1.50 runs per over, and this is an outstanding bowling performance in 5 overs format। तो यहां पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, शाम के 6:40 यहां पर बच चुके हैं, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ और इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट का 2 ओवर यहां पर बाकी इस मेगा फाइनल मैच में। और इस बीच गेंदबाज तैयार, हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गेंदबाजी शुरू करते हुए कहना पड़ेगा, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, 42 टू गेट नाउ इन द रनिंग 2 overs। और हकीम ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑप्शन पर निकलते हुए ऑप्शन से बाहर, विकेट कीपर ठीक से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, वाइड का इशारा, 2 रन मिलेंगे। आप इस वक्त उन्हें विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, जब 42 रन 2 ओवर में बनाने हो तब आप वाइड फेंकेंगे तो निस्संदेह उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में रन प्रदान करने के बराबर होगा। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ तो यहां पर ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा चूंकि और गेंद सीधे इस पर, और इस बार गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है और इसी के साथ अरशद की पारी पर पर्दा गिर चुका है। तो विकेट यहां पर गिरा और गोरी यंग बॉयज कहना पड़ेगा परेशानियों के दलदल में और धंसता हुआ। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी, चमत्कारी बल्लेबाजी ही गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकती है और 5 स्टार अड्डूर का तख्ता पलड़ा इस वक्त भारी लगता हुआ। 11 गेंदें बाकी और अब रन से चाहिए 42, 42 इन रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और नए बल्लेबाज यहां पर तैयार, शिवराज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते हुए। और शिवराज का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें खेलनी है वो तकनीकी तौर के बल्लेबाज और यहां पर खेलनी है उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी। और देखते हैं किस तरीके से वो यहां पर गोरी यंग बॉयज की नैया को सही तक पहुंचाते हैं। 42 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 डिलीवरीज। और शिवराज इस वक्त गेंदबाजी, माफ कीजिए, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हकीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त तैयार, ऑप्शन से बाहर और 1 रन फिर से मिलेगा। 13 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और स्कोर चाहिए, रन चाहिए 39, गेंदें बाकी हैं इस वक्त 11। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 4, शिवराज की पारी समाप्त 0 पर और गोरी यंग बॉयज काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। तो 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है
39 रन और बनाने हैं उन्हें विजय के लिए। और यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ प्रताप, जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मैच में एनएम क्रिकेटर्स के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। एक छक्का भी उन्होंने जड़ा था और वो छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था वो छक्का। और यहां पर देखते हैं इस फाइनल मैच में वो क्या करते हैं। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली और इस बीच एक रन मिलेगा। आई थिंक इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। और इस बीच गेंदबाज हकीम एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप सामना करने के लिए तैयार। 38 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 balls. ये गेंद रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली एक्सक्यूजेड एंड आई थिंक इट्स कुड बी फेल शॉर्ट ऑफ फेंस. One bounce into the fence, or Nissandev with a twisted bat, he just got that one right from the middle of the bat and scooped that one with a style over deep backward third man for a boundary after one bounce. 18, 34 to get now, and the ball is remaining 8. तो 8 गेंदे 34 रन चाहिए। हकीम इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, एक रन इस बीच मिलेगा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। लगभग अंधेरा सा मैदान पर छा चुका है, गेंद को साइड करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और कुल मिलाकर इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में सिर्फ 7 गेंदे अब बाकी रह गए। 1.1 ओवर का खेल यहां पर बाकी रह गया है और इस ओवर में अंतिम बार हकीम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रज्वल स्ट्राइक लेते हुए हकीम की ओवर की अंतिम गेंद का लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल के लिए हकीम। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। 26 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 26 रन और बनाने हैं और अंतिम ओवर बाकी। और सतीश आप क्या कहेंगे इस वक्त? 26 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में और ये छक्का मैं समझता हूं गोरी यंग बॉयज के उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुका है। Absolutely, Gopi, and maybe it's too late. That kind of explosive strokes is required in the early in the innings of GORI YONG boys, but unfortunately they are not having that much of big strokes in the first 3 overs. But like they got that one in the 4th over, the last delivery of the 4th over, and now I think 24 runs to get, 26 to get. Half of the job is completed in 4 overs, Gopi, and they have to complete another half of the job in only 1 over. That shows this definitely it's going to be a very difficult one. It's definitely going to be very difficult and difficult one in this condition. Hitting 4 sixes or 3 boundaries and 1 6. It's definitely going to be a very difficult one. And in this condition, and wait and see how Pratap and Prajwal will going to get this 26 runs. Prajwal got a fantastic stroke that was in the previous over. He got right from the middle of the bat, clearing the fence. This time, dotted delivery number 1. Now 5 balls remaining, 26 runs required for the victory. This is a decider delivery. This is definitely a decider delivery for GORI YONG boys. In this particular delivery, if they are able to get one big shot, then they can keep their hope for the next delivery. This time loft hit, not more than a single, and that's it. 25 required for the victory in 4 deliveries. 4 sixes will go into tie the match. The last and the final chance for GORI YONG boys. Again, driven down to mid wicket region. Not more, just the boundary. Oh, the boundary they got for 31 now. And 31 means another 21 more runs required for the 33. 30 required. 22 required, correction. 22 required from 3 balls. Again, one more dotted delivery, and now I think no one can stop 5-star ADOOR to become the champion of this cricket tournament. 21 required from 2 balls.
Here is Niner. Bowls. Went for the big shot. Lofted. High up in there. And Altaf is underneath it. He takes the catch. Look at the flags are flying around of 5-star ADOOR. The noises going harder and harder. They desperately wanted to see. They desperately wanted to enter the ground. They desperately wanted to lift their players, the favorite players. They were the one. They made their ADOOR the very popular by winning this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. Just one delivery remaining for the celebration here for the 5-star ADOOR. Here you go. Balls, copybook style, defensive. That's it. 5-star ADOOR are really making a history in the UCG cricket ground. First time in history that 5-star ADOOR are becoming the champion, defeating GORI Young boys very comprehensively. The margin of exactly 30 runs. They defeated the opposition and came in and becomes the champions of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. Congratulations 5-star ADOOR and every supporters of 5-star ADOOR. They're entering into the ground and celebrate begins.